Circular dichroism or series spectroscopy. Circular dichroism is observed when an optically active matter like protein, carbohydrates absorb left and right hand circular polarized light slightly differently. That is, absorption of left and right handed circular polarized light uh, differs in their absorption by a substance. It is a type of absorption spectroscopy that can provide information on the structures of many types of biological macromolecules. Solution of optically active substances are required because they show the absorption phenomena of plain polarized light. What is plain polarized light? Let us before going further, let us understand what is plain polarized light or linearly polarized light. You can see there is a wave which is propagated in this direction. This has two vectors which are perpendicular to each other. This vector E represents electrical vector while M represent magnetic vector, and these are perpendicular to each other. Now, the phenomena we are going to study is present in electrical vector. So, uh, we will consider only E vector in unpolarized light. What happens? E vectors are distributed evenly in all directions. When this light passes through a polarizer, this polarizer permits only one vector to pass through it, and that is the direction of propagation. So this is plain polarized light or linearly polarized light, and its direction of propagation is this. While now, after this state, in this state, it has only single vector. Now, we can study here also. Light is an electromagnetic wave consisting of an oscillating electric E field and a magnetic field, both of which can be represented by mutually perpendicular vectors. The plane of polarization is defined as the plane of E vector because a light source usually consists of a collection of randomly oriented emitters. The emitted light is a collection of waves with all possible orientations of E vector. Plain polarized light is usually obtained by passing light through an object or Polaroid screen or a nickel prism that transmits light with only a single plane of polarization. If natural light is passed through a polarizer, that is material which can be nickel or a sheet of Polaroid having the property of absorbing or selectively refracting one of these components, the emerging light beam vibrates only in the plane of unabsorbed or unrefracted component. This is referred to as linearly polarized or plain polarized light. Polaroid का क्या function है? It absorbs all the light coming on it and permits only one vector to go forward. Or in other words, it selectively refracts only one of many components falling on that. और जो आगे बढ़ती है बीम वो प्लेन पोलराइज्ड और लीनियरली
polarized light कहलाती है. If this plane polarized light is allowed to pass through some optically active material, the plane of emerging beam is rotated through an angle which depends on the temperature, concentration, solvent, wavelength of uh, plane polarized light, and the number of symmetric molecules which beam encounters. If this plane polarized light is allowed to pass through some optically active material, the plane of emerging beam is rotated through an angle which depends on the temperature, concentration, solvent, wavelength of the plane polarized light, and the number of symmetric molecules which beam encounters. This you already know what happens when a plane polarized light enters any optically active material. So, what is the consequence of this? Two linearly polarized light beams with equal amplitudes but with their plane of polarization at right angles may be combined to give different types of vibrations. This is another fact which says if we take two linearly polarized light beams with equal amplitude but with their plane of polarization at right angles may be combined to give different types of vibrations. This is this has to do with circular dichroism. So let us remember this fact. Now we have studied this part. Now, what is circular polarized light? The E vectors of two electromagnetic waves of plane polarized lights are 1.5 wavelength out of phase and are perpendicular. E vectors of two electromagnetic waves of plane polarized lights are 1.5 wavelength out of phase and are perpendicular like this. Two are perpendicular, but one is starting from here, other is starting from here. Only one half. If we take this length, the 1/4, sorry, 1/4 distance. First wave is moving like this, and second starts from here. So the difference between these two vectors is 1/4. The vector that is sum of E vectors of the two components. Now, sum of this and sum of this. Two waves are moving in this direction, forward direction. This wave has this vector, this another wave has this vector. Now, it will progress in the forward direction. This will also progress in the forward direction, and both the vectors will combine to give rise to an elliptical path. Let us see what is written here. The vector that is sum of E vectors of the two components rotates so that its tip follows a helical path, dotted line. This is one vector of one wave. This is another vector of other wave. And when both are moving simultaneously, then a third vector is generated, tip of which will follow dotted line. This dotted line. Sum of this vector and this vector will follow this dotted line. So this is the effective direction of movement of the sum of two waves.
Such a light is called circularly polarized. It can again be right circularly polarized light if the E vector rotates clockwise to an observer looking at the source. If the E vector rotates anticlockwise to an observer looking at the source, then it is left circularly polarized wave. Circularly polarized light thus represents a wave spiraling around the direction of propagation of the ray. Now, what is the difference? You can see here. This is the linearly polarized light. What happens? This is moving like this. This is E vector. And this is lambda. This length will be lambda. Now, this is circularly polarized light. You can see the difference here. And in linearly polarized light, electric vector direction is constant. Magnitude varies. Circularly polarized light, electrical vector direction varies. डायरेक्शन डिफरेंट हो जाता है जबकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है. Again you see this picture. This it will take this form. डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है and मैग्नीट्यूड वेरीज. मैग्नीट्यूड कहीं पे इतना है, कहीं पे इतना है. इसका उल्टा क्या है? वेक्टर डायरेक्शन चेंजेस, लगातार डायरेक्शन चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड बराबर का है. इन दोनों में ये फर्क है. Again, that is shown here. Circularly polarized light again can be right-handed or left-handed depending upon whether it is moving in the clockwise direction or anti-clockwise direction. Circular dichroism. Circular dichroism or CD measures the difference between absorption of left and right-handed circularly polarized light. Here absorption is shown on the y-axis, wavelength is shown on y-axis, x-axis, and you can see the absorption. Due to dichroism, the wavelength will be shown in this nature. It is left and right-handed circularly polarized light. Here, this is another figure in which photon beam having this kind of light is passing through the optically active sample, after which a CD signal is obtained, which preferentially absorb right-hand polarization. Here it is shown that it is preferentially absorbs right-hand polarization so that this direction, left-hand circularly polarized light has higher magnitude as compared to right-handed polarized light. This is measured as a function of wavelength and the difference is always very small. After passing through a sample, L and R beams have different amplitudes and the combination of the two unequal beams gives elliptically polarized light. Hence, CD measures the ellipticity of the transmitted light, the light that remains, which means that is not absorbs and can come out of
an optically active sample. You can see again elliptical part. If two waves have same amplitude, the result is plane polarized light. They have same amplitude and one is going anti-clockwise, other is going clockwise, then the result, it will result into plane polarized light. If their amplitudes differ, the result is elliptically polarized light. This is the amplitude of anti-clockwise direction, and this is the amplitude of right direction or clockwise direction, and net result of the wave comes out like this. Elliptical movement of the wave is seen, and this is called circular dichroism. Again, plane polarized light can be decomposed into R and L components. Now, what is the principle? How will you write principle? The inherent asymmetry in the structure of chiral molecules or centers results in the differential absorption of these two components of circularly polarized light, and this phenomena is referred to as circular dichroism. एक या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लाइट को काइरल मॉलिक्यूल्स ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, दूसरे को कम एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिट होके बाहर आएगी. Due to this difference in molar absorptivity, that is EL and ER will not be equal and will differ in their amplitudes, and as a consequence will oscillate not in form of circle but in elliptical path. This phenomena we have seen already in the previous part of this chapter. Circular dichroism spectroscopy is based on the measurements in ellipticity on passing a circularly polarized light through the solution under examination. Here, this is the sample of some concentration C. Wavelength lambda is passing through this cuvette containing sample, and intensity of light is given by I0. This comes out or transmitted light with the intensity of I, and the path length is L. Now, absorbance according to Beers-Lambert's law will be log I0 upon I, or absorption at a given lambda is equal to extinction coefficient at that lambda and IC, L and C. Using this formula, measurement of the concentration of the sample will be carried out. Longer the path or more concentrated the sample, the higher the absorbance. Obviously, you know, concentration is of sample is higher or path length is greater, then the light will be absorbed more. CD measures the difference between absorption of right and left-handed circularly polarized light using following equation. Delta A lambda is equal to AR lambda minus AL lambda, that is epsilon R at a given lambda minus epsilon L at a given lambda multiplied by path length and concentration of the solution. So change in absorption at a given lambda will be change in epsilon or coefficients, extinction coefficients at that lambda
into path length and concentration. The values which are obtained are given here. This is typically less than 10 millimolar per centimeter. A typical epsilon maybe for something is itna molar and per centimeter. So the CD signal is very a small difference between two large originals. A CD spectrum. The spectrum of a solution is a plot of electricity versus wavelength. CD is only observed at wavelengths where absorption occurs in absorption band. So, wavelength of absorption of any particular substance will be used for CD measurements. Like for protein, it should be 280 nanometers. For nucleic acid, it should be 260 nanometers. So, if we are using the molecule whose absorption maxima is known, then that wavelength will be used to produce or measure the circular dichroism. CD arises because of the interaction between different transition dipoles during the absorption, as this depends upon the relative orientation of different groups in a space. The signal is very sensitive to conformation. So, as the conformation of the substance, optically active substance, varies and its groups, arrangement of groups in space vary, the CT spectra will also vary, and that will be a characteristic feature of that particular substance. A circularly polarized light is generated by passing plane polarized light through a quarter wave plate. Such a light can be resolved into two waves, lying in planes at right angles to each other. These have equal amplitudes and frequency, but these differ in phase by 1/4 of a wavelength. आपको फोटो में दिखाया था कि एक वेव जहां से चलती है उसके 1/4 के बाद दूसरी वेव चलती है. सो दो वेव्स चलेंगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और राइट एंगल्स पे होंगी, और एक जहां से चलेगी उसके 1/4 के बाद, टाइम के बाद, थोड़े डिफरेंस पे, 1/4 के डिफरेंस पे परपेंडिकुलरली दूसरी वेव चलेगी, और जो उनका नेट वेक्टर होगा वो फिर elliptical path show करेगा. These electrical vectors of these light waves at any point in the path of the wave describes circle about the direction of propagation of light as the axis. Just as the plane polarized light, the circularly polarized light is either left-handed or left-handed or right-handed. The relative just as the plane polarized light, the circularly polarized light is also like left-handed or right-handed. The relative positions of the peaks of the two plane polarized waves determine whether the circularly polarized light is of L or R type. Okay, whatever relative positions of the peaks of the two plane polarized light waves determine whether the circularly polarized light is of L or R type. किस टाइप की, जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा और जिस पॉइंट पे L ज्यादा है या R ज्यादा है, तो उस समय वो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट ER टाइप की है कि L टाइप की है, ये उससे पता चलेगा. Now, instrumentation part. This is source.
सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट पहले ही हमने कहा कि जब सैंपल जिस मैक्सिमा पे, जिस वेवलेंथ मैक्सिमा पे एब्जॉर्प्शन शो करता है, सोर्स वही लाइट, वही वेवलेंथ एमिट करेगा. दिस इज द मोनोक्रोमेटा. Monochromator will choose the single wavelength. यहाँ पे अभी लाइट अनपोलराइज्ड है. B सॉरी दिस इज पोलराइजर. पोलराइजर से निकलने वाली लाइट नाउ अब पोलराइज्ड है. फिर लाइट ऑफ चेंजिंग सर्कुलर पोलराइजेशन, फिर यहाँ से ये सैंपल में एंटर होएगी. सैंपल में एंटर होने की वजह से उसके लेफ्ट हैंड पोलराइज्ड लाइट और राइट हैंड पोलराइज्ड वेव्स के एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस होगी. फिर वो ट्रांसमिट होगी बाहर, और दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट विच विल डिटेक्ट कि कितना कितना चेंज आया, कितना डिफरेंस आया उसके लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड कंपोनेंट में. For CD measurement, in principle, two light sources are needed, one for L and other for R, circularly polarized light, each provided with monochromator for wavelength selection. But in commercial instruments, some trick is used to generate L and R varieties from single source. एक ही source से right and left polarized light is produced. Plain polarized light is passed through a crystal that is subjected to an alternating electric field. This crystal is known as electro-optic modulator. It has the remarkable property that the polarity of the field determines whether L or R component of light is transmitted. ये L और R दोनों को ट्रांसमिट कर लेता है. जैसा कि पहले कहा गया कि दो सोर्स होने चाहिए L और R दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक ही सोर्स से दोनों वैरायटी प्रोड्यूस की जा रही है. इट हैज द रिमार्केबल प्रॉपर्टी दैट द पोलैरिटी ऑफ द फील्ड, उसकी फील्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, और L और R कॉम्पोनेंट दोनों बाहर निकलते हैं बिकॉज द फील्ड इज ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि AC करंट है यहाँ पे चल रही है. द बीम कंटिन्यूअसली मॉड्यूलेट्स from the production of L to production of R. AC करंट की वजह से ये पॉसिबल हो जाता है. This beam then passes through sample cell and falls on a photomultiplier tube. The output of the photomultiplier is then processed electronically in a fairly complex way to provide a voltage that is proportional to the electricity. This is automatically plotted as a function of wavelength to give the CD spectrum. Now finally, applications of CD. Determination of secondary structure of proteins that cannot be crystallized. हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, उससे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की जा सकती है. एक मेथड हमने पढ़ा जहाँ पे प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी स्ट्रक्चर डिटरमिन होता है, एंड दैट वाज NMR स्पेक्ट्रा लिया जा सकता है जिनका कि क्रिस्टल नहीं बनता है. दिस इज अनदर टेक्निक इन विच secondary structure of proteins that cannot be crystallized are determined. Investigation of effect of drug binding on protein secondary structure. उस पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे ड्रग बाइंड हो रही है या कोई और लिगेंड बाइंड हो रहा है, मेटल बाइंड हो रहा है, उसको डिटरमिन किया जा सकता है. डायनेमिक प्रोसेसेस लाइक प्रोटीन जब फोल्ड हो रही है तो अनफोल्डेड, फिर बीच का इंटरमीडिएट फॉर्म, देन फोल्डेड फॉर्म, ये पूरा प्रोसेस देखा जा सकता है. स्टडीज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द प्रोटीन, लाइक टेम्परेचर से क्या प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर चेंज आता है, पीएच और डिफरेंट चीजों से जिनसे भी इस पे फर्क आता है प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो वो देखा जा सकता है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सुपर सेकेंडरी
स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन कैसे बन रही है, मेम्ब्रेन में उस प्रोटीन्स का क्या स्ट्रक्चर है, या ओवरऑल मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है उसकी वजह से, दैट कैन बी फॉलोड. स्टडी ऑफ लाइगेंड इंड्यूस्ड कन्फॉर्मेशनल चेंज लाइक ड्रग बाइंडिंग. लाइगेंड माने कि कोई भी जो भी चीज जो प्रोटीन पे से इंटरैक्ट कर रही है, और उस इंटरेक्शन की वजह से इफ देयर इज एनी कन्फॉर्मेशनल चेंज दैट कैन बी फॉलोड. देन कार्बोहाइड्रेट का कन्फॉर्मेशन देखा जा सकता है, क्योंकि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है. तो अगर वो कुछ बना रहा है, कोई स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड्स कोई स्ट्रक्चर अज्यूम कर रहे हैं, या इवन उनका भी चेयर फॉर्म बोट फॉर्म आप पढ़ चुके हो, तो उनका कन्फर्मेशन पता किया जा सकता है. इन्वेस्टिगेशंस ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शंस, दो मैक्रोमोलिक्यूल्स आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट कैन बी recognized. And fold recognition within one protein where it is folded or unfolded. कहने का मतलब है कि different types of protein structures may be seen or followed here. This is one application or diagrammatic representation of uh, peptide bonds in polypeptide chain. Any optical activity from side chain chromophores is induced and results from interactions with asymmetrical neighboring groups can be seen by this process. You know that CONH, this bond is very rigid. तो क्या चेंज होता है, खाली R ग्रुप चेंज होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स में, पॉलीपेप्टाइड चेन में. तो वो कैसे हैं, वो आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, दिस कैन बी फॉलोड बाय CD, taking CD spectrum, CD signals for different secondary structure. When we follow different types of structure, alpha helix of same protein will give, if this giving is this type of spectra, then beta sheet है तो वो इस तरह का फॉर्म कर रही है. एंड फाइनली रैंडम कॉइल है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है. These are the Fastman standard curves for polylysine in different environments. Environment change करेंगे तो सिर्फ एक अमीनो एसिड से एक पॉलीपेप्टाइड बना लिया, उसका एनवायरनमेंट चेंज किया, एनवायरनमेंट चेंज करने के साथ उसकी वेवलेंथ उसमें चेंज करते गए, तो उससे पता चला कि किस एनवायरनमेंट में सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉलो, कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, और वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर सर्कुलर डाइक्रोइज्म किस वैरायटी की दे रहा है किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में वो कैसे वेरी कर रहा है. दिस इज द रिजल्ट. किस तरह का सिग्नल मिलता है. ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं. कोयल है, 100% helical at 0 degrees centigrade. It melts to a random coil at high temperature. और ये डिफरेंट हो किस टेम्परेचर पे उस पे क्या असर आ रहा है. ये दिस इज वन प्रोटीन GCN4-P1. दिस इज पब्लिश्ड इन दिस पेपर, और उन्होंने उसका स्ट्रक्चर CD सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी से फॉलो किया. एडवांटेजेस क्या है? Simple and quick experiments can be done. No extensive preparation is required. आपको पता है कि क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसे होता है. सो क्रिस्टल बनाने में सही न्यूक्लिएशन होना चाहिए, सही साइज का क्रिस्टल बनना चाहिए, छोटे छोटे बहुत नहीं बनने चाहिए. तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन लिया और उससे एक्सपेरिमेंट कर लिया, उस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली, और वो जो ट्रांसमिटेड लाइट आई उसका पाथ ऑब्जर्व करके उसको रिजल्ट को इंटरप्रेट कर लिया. So no extensive preparation is required. Measurement
सोल्यूशन फेज में कर सकते हैं, क्रिस्टल नहीं चाहिए, रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ सैंपल बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो बहुत सी प्रोटीन्स होती हैं जिनमें कम अमाउंट हम निकाल पाते हैं, प्योर कर पाते हैं, तो वो ज़्यादा अमाउंट चाहिए ही नहीं, तो कम में हो जाता है। माइक्रोसेकेंड टाइम रेजोल्यूशन, माइक्रोसेकेंड्स में भी अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो ये रिजॉल्व कर देगा, यानी कि दो डिफरेंट फिनोमिना को आपस में डिस्टिंग्विश करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर अल्फा हेलिक्स जो है रैंडम कॉइल में जा रही है, तो माइक्रोसेकेंड में उसमें जो डिफरेंस हो रहे हैं किसी एक गिवन चेंज्ड एनवायरनमेंट में, अगर हम टेम्परेचर बदलते जा रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हेलिक्स जो है रैंडम कॉइल में जा रही है, तो माइक्रोसेकेंड के डिफरेंस पे अगर ये चेंज हो रहा है, दैट कैन बी डिटेक्टेड। और मैक्रोमोलिक्यूल किसी भी साइज का हो सकता है। सिमिलरली हमने देखा था कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में पता कर सकते हैं। जनरली मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बरीड प्रोटीन्स होती हैं या ट्रांसमेम्ब्रेन या पेरिफेरल होती हैं, आप जानते हो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो मगर उनको एक तो क्वांटिटी में कम होती है, उनको ऑब्टेन करके उनके बारे में स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, जो कि सीटी स्पेक्ट्रा कर देता है। crystallography is difficult. There's no need to use detergent even when structure is obtained. There's one question: is it the same as in lipid membrane? CD ideal can do spectra of protein in lipid vesicle also. तो अगर वेसिकल के अंदर प्रोटीन है और उसमें चेंजेस आ रहे हैं या वो चेंजेस दे रहा है, then that can be detected. And the example is here. मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइंड मोनोमर, यहाँ पे पोर फॉर्मेशन हो रहा है, तो सॉल्युबल मोनोमर है ये, जो सॉल्युबल है ये पोर बना रहा है, प्री पोर स्टेज है, देन पोरस स्टेज है। This model was built by combining CD results with mutagenesis cross-linking channel measurements. Again, a summary of the CD is: CD is a useful method for looking at secondary structures of proteins and peptides. It is an adaptation of a standard absorption spectroscopy in which the difference in the absorption between left and right-hand circularly polarized light is measured. CD can be measured under a wide range of conditions, like it is good for membrane proteins especially. CD can be used to measure change अभी बताया आपको कि अल्फा हेलिक्स रैंडम कॉइल में जा रही है, तो वो ढूंढ के बताया जा सकता है। CD complements other more detailed techniques such as crystallography. तो ये माइनर डिटेल्स, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बहुत बड़ा, आपको बहुत ढेर सारे डॉट्स मिलते हैं, बहुत सारा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। उस एनालिसिस में ये कॉम्प्लीमेंट भी करता है और हेल्प भी करता है कि वो पर्टिकुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसा है। सो दिस इज ऑल फॉर CD spectroscopy.